सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज तो मुझे पांडास चाहिए, नंपाई चाहिए, मैटप्लॉट चाहिए, सीबोर्न चाहिए। ये चार चीज की तो बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट है मुझे। सो लेट आई जस्ट इंपोर्ट नंपाई। सेकंड थिंग इज let I just import numpy is np, import pandas is pd, then matplotlib मुझे import करना है, so import matplotlib dot pyplot as plt and import cboard. okay, अब इसको हम लोग पहले सेव कर देते हैं, like let I just save on desktop. iris.py चेक कर लेते हैं कोई मॉड्यूल्स, मतलब सब के सब मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर कोई मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, और आपको पता है हाउ टू इंस्टॉल ऑल दिस लाइब्रेरीज। फॉर दैट वी हैव टू सिंपली राइट डाउन pip install numpy, pip install pandas, pip install actually matplotlib and pip install cboard. नाउ फाइनली सबसे पहली चीज तो मुझे एक्चुअली डेटा सेट चाहिए। अगर मैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम अप्लाई करूं, so we learn decision tree. Decision tree internally uses either Gini index or entropy or Gini ratio or like gain ratio, something like that. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे Gini index internally अप्लाई करूँ, सॉरी डिसीजन ट्री अगर अप्लाई करूँ, इंटरनली कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहा है राइट नाउ मुझे नहीं देखना, इंटरनली कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है हम लोग चेक नहीं करेंगे, बट सबसे पहली चीज वी रिक्वायर अ डेटा सेट. So for the data set, we have guys one more module that is sklearn, that is scikit-learn actually. Okay, so from scikit-learn, import data sets. So it has lots of data sets. जहाँ पे आप practice purpose पे कोई भी चीज build up कर सकते हो. We already discussed that. Okay, so from sklearn, from scikit-learn, import data sets. Okay, and using these, I want to just using this there is from these data sets, I want to load iris data set. So let I just say iris is equals to datasets dot load dataset. Load, sorry, not load dataset, load iris actually. Okay, load iris. So it will just load the iris dataset. So let me just check कि iris dataset मुझे क्या दे रहा है. So let I just check the type of that. So type of iris, and let I just print the iris also. So उसको print भी कर देता हूँ. So that's that. So this is the iris data. Okay, but मुझे actually data type में interested है, data type क्या मिल रहा है मुझे, because that's what is that? It's actually object of, that is nothing but an object of sklearn utis bunch. Okay, so that's an inbuilt class. Otherwise, I can simply say that is an inbuilt class. Otherwise, predefined class of iris actually. Okay, तो ये sklearn का utils package का bunch नाम का class का object return कर रहा है, but हम लोग को इसके ऊपर तो work करना आता नहीं. So what we can do, like let me convert that one in a actually data frame. Let me convert this one in a data frame. So how to convert that? So df is equals to pd dot data frame. df is equals to pd dot data frame. Now guys, हमारा data किसके अंदर है? Data frame में आपको पता है सबसे पहले मुझे data पास करना होता है. Data in the sense what? जिस चीज को आप data frame में convert करना चाहते हो, जो भी चीज को आप data frame में convert करना चाहते हो, you have to just write on that thing. So here I have actually iris. तो मैं iris को df में convert करना चाहता हूँ. So now let me print df. So check करते हैं क्या मिल रहा है हम लोग को. So now it generates the error. Errors must all be same length. So कहाँ पे error generate हुई? सबसे पहली चीज तो यहाँ पे array होना चाहिए, but we have not an array. We have not an array. So guys, हमारे पास यहाँ पे कुछ different type था. iris is nothing but an object. जबकि अगर मैं data frame का help open करूँ, so मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? We need actually array. So हम लोग पहले हेल्प ओपन करते हैं तो सिंटेक्स से थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, रिकॉल कर लेते हैं सिंटेक्स. सो डेटा फ्रेम में सबसे पहला आर्गुमेंट था डेटा इक्वल्स टू नल. एंड व्हाट अबाउट द डेटा? डेटा में बी एन एनडी एरे, इट में बी एन इटरेबल डिक्शनरी और डेटा फ्रेम और डिक्शनरी कंटेंसीज, एरेज, कांस्टेंट्स, like list, like objects. But what we passed, actually we passed actually object. This is nothing but an object, so we cannot use this. अब इसको यूज नहीं कर सकते. So what to do for this? हम लोग के पास आइरिस के अंदर, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमारे पास आइरिस के अंदर कुछ डेटा था. हमने जब आइरिस को प्रिंट किया तो उसके अंदर सबसे पहली चीज मेरे पास थी डेटा. इट्स जस्ट प्रिंट अ डिक्शनरी टाइप ऑफ थिंग. उसमें सबसे पहला की था डेटा.
एंड डेटा के अंदर एक्चुअली एरे है, डेटा के अंदर एक्चुअली एरे है। तो गाइस जस्ट चेक दिस थिंग, अगर ये डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में से मुझे अगर ये एरे एक्सेस करना हो तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? आई हैव टू सिंपली राइट डाउन iris स्क्वायर ब्रैकेट डेटा। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना चाहिए, iris स्क्वायर ब्रैकेट एंड डेटा, बिकॉज दैट्स इन की ओनली। ओके, सो मैं ये स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ जहां पे हमने डेटा फ्रेम का हेल्प ओपन किया था। नाउ लेट वी रन। So finally, I think DF is work. Okay, so now the problem is, okay, यहाँ पे मुझे कोई problem नहीं था. Now DF was created. Okay, data frame was created, but what is the problem? The problem is यहाँ पे column के नाम 0, 1, 2 and 3, 0, 1, 2, 3 है, जबकि मुझे column के नाम features या ऐसा कुछ भी रखना है. Okay, मुझे column के नाम कुछ तो changes करने हैं. And another thing is ये actually अगर आप iris को study करें, then in iris actually we have 4 columns. Let us just do one more thing. Like iris के अंदर जब आप ये iris को print करोगे, then we have one more column that is actually target. मैं repeat कर रहा हूँ, हम लोगों ने सबसे पहले डेटा सेट को लोड किया, डेटा सेट को लोड करने के बाद हमने उसको स्टोर किया iris के अंदर. जब आप iris को प्रिंट करोगे, at that time it's nothing but in type of some predefined object of scikit-learn. Okay, of scikit-learn actually. scikit-learn का कोई predefined class का object है वो, और उसके अंदर एक्चुअली डिक्शनरी फॉर्मेटेड डेटा है. ओके, तो डिक्शनरी फॉर्मेट पे हमारे पास की वैल्यू पेयर फॉर्मेट होगा. सो फर्स्ट की इज नथिंग बट डेटा हैविंग एन एमडी एरे, अनदर वन इज ए टारगेट इन द सेंस हम लोग एक्चुअली डिसीजन ट्री पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अनसुपरवाइज्ड, सो दैट इज एक्चुअली सुपरवाइज्ड क्लासिफायर इन द सेंस व्हाट क्लास कॉलम इज ऑलवेज गिवन. सो दिस इज द क्लास कॉलम डेटा. नाउ अनदर थिंग इज यहाँ पे आप देखिए हमारे पास टारगेटेड नेम दिए हुए हैं. सो टारगेट में जो मेरा पास डेटा अवेलेबल है उसका नाम क्या है? इट इज एक्चुअली सेटोसा, वेसिकलर एंड अवर्जिका. ओके, मेरे पास 3 चीजें वो थी. एंड वी हैव वन मोर थिंग दैट इज एक्चुअली फीचर नेम्स. जस्ट सर्च दैट, हमारे पास एक और चीज होगी दैट इज एक्चुअली फीचर नेम. Yeah, here it is. Just focus on that. So here we have one more thing that is actually feature name. So we have actually sepal length, sepal width, petal length, and petal width. So totally we have actually 4 columns. And 4 column names are, these 4 column names are actually sepal length, sepal width, petal length, and petal width. So guys, what is the problem? मैं directly ये iris of data को अगर मैं convert करके df के अंदर store करूँ, ensure data frame में convert करूँ, what is the problem? Problem is right now I am not familiar with the column name. Okay, I am not familiar with the column name. तो मुझे column के नाम चाहिए. So we have 2 options. The first thing is हम लोग यहाँ manually लिख देते हैं. क्यों column के नाम चाहिए? Because मुझे इन सभी columns के बीच में पहले relation find out करना है. Okay, मुझे check करना था किसी में कोई unique values तो नहीं है. Should I ignore that? Okay, कोई missing values तो किसी में नहीं है. Okay, मुझे उस missing value के साथ deal करना है कि नहीं. So I want to know all these things. But मान लो किसी ने बोला some missing values are there. Otherwise there is no relation in between these 2 columns. But column के नाम मुझे क्या मिलेंगे? कॉलम के नाम मुझे मिलेंगे डीएफ के हिसाब से 0, 1, 2, 3, but data frame allows us to just provide the label. So how to set the label? So guys, we have 2 options. Either the first one is, जैसे हमारे पास features names इस sequence में दिए थे, so you can do one thing, आप यहाँ पे manually hard coded लिख सकते हो columns is equals to and just provide all these names, sepal length, sepal width, petal length, and petal width. So let I just write down sepal length. Okay, another one is actually sepal width, another one that's a petal length. Sequence वही रखिएगा, so in future problem ना हो. Petal width. So you can do this. The first thing, आप ऐसा कुछ कर सकते हो. Now column having some title. Okay, sepal length, sepal width, petal length, petal width. But what about this? ये actually है क्या? What about this sepal length, sepal width? मान लीजिए यहाँ पे 10 to 15 columns होते तो so it's hard to write down. तो उसका नाम क्या है एक्चुअली? आप अगर फेच करना चाहते हो then iris में से डायरेक्ट फेच कर सकते हो. So you can simply write down this thing. अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं then आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हो. Like in a square bracket, sorry, in a columns, what I have to write down, I have to just write down iris, and in a square bracket I have to just write down key name. What is the key name? I just highlighted that. That is actually feature underscore name. Okay, that is actually feature underscore names. That's that. So आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. So that's that. So here we have sepal length, sepal width, petal length, and petal width. So now one more thing is there. यहाँ तक तो कोई problem नहीं है.
But sir, where is the target column? अगर हम data set load करते हैं, then we require features as well as we require target. हम लोग को दोनों चीज की जरूरत है. We require features as well as we require target. So what is the target column name, guys? The target column name is actually target. Did you observe one thing? जब हमने iris को print किया था, so first thing is nothing but the first key name is actually data having 4 columns. Actually having an ND array. ND array में वापस 4 columns है. Another key is actually target key. तो मुझे इसको भी लोड करना है. So what to do? मुझे एक्चुअली जब iris का डेटा में लोड करूं as well as मुझे उसके साथ साथ टारगेट भी लोड करना है. इसके साथ मुझे टारगेट भी लोड करना है. बट डिड यू नो as we know कि जैसे पहला आर्गुमेंट में डेटा था जिसमें आप कोई एक वैल्यू पास कर सकते हैं. You cannot pass 2 different values. तो मैंने पहला तो iris डेटा लिया. Another thing I need to pass that is actually iris and target. So मुझे दूसरी चीज पास करनी पड़ेगी iris target. So guys, what we can do, actually iris data it's an ND array, iris target it's an ND array. So can we concat this to ND arrays? हम इन दोनों ND array को concat कर सकते हैं. Yes, we have the option to concat both this ND array, and ND array it's a data structure of numpy. So guys, you can simply say that you can simply write down np dot c underscore and just pass this thing. Okay, so first one is iris data, second one is iris target. So what it does, it दोनों को combine कर देगा. So दोनों को merge कर देगा. 1 minute. C class object is not callable. 1 minute. It's not okay. It's not a class. यहाँ पे मुझे argument पे pass करना है. Okay, you can just use concat function. Okay, आप concat function भी use कर सकते हो. It's not a big deal. Now, what is the problem? Shape of the passed value is 150 by 5. Indices imply 150 by 4. Now, what is that? Now, let I comment this. अब यहाँ जो problems आ रही है इसके लिए columns को एक बार comment कर देता हूँ. Columns को एक बार हम comment कर देते हैं. Now, let me write. Okay, so now मैंने actually combine किया. So right now I have 5 columns, 0 to 4. Okay, and actually हमने column के नाम कितने pass किए? We just pass only 4 names. We just pass. Okay, तो last में मुझे एक simple. This is nothing but a list. ये list है. Okay, that is nothing but a list. Column के नाम में हमने जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने ऊपर जो हमने hard coded values pass की थी. That is actually list type of data. So दो list को अगर merge करना है then guys you can simply use the plus actually. Okay, तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट टारगेट. सो नाउ लेट मी रन. व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहीं पे ब्रैकेट का इशू है. ठीक है, सॉरी. कमेंट रिमूव किया था, ब्रैकेट रिमूव करना है. दैट्स इट. सो व्हाट इज दैट np.c underscore? नाउ जस्ट चेक दिस. Okay. Now what about this np.c? It is just used to concat two things. अगर आपको उसका भी हेल्प चाहिए then guys you just write down help and np.c underscore. So what is the task of that particular function? It is just used to concat two things. Just read this. Okay, it is just used for the concatenation operation, but on a second axis. Ensure x and y, then y axis पे merge करेगा. मतलब column wise merge करेगा. Okay, so that's that. So consider ये एक simple सा example था. np.c underscore. This is your one dimensional array. This is your one dimensional array. So 1 2 3 and 4 5 6 दोनों को concat करके इस तरीके से ला देगा. Okay, in short, you can simply say that it's just like concat by column actually. अगर आपको ये same चीज चाहिए, then you can just use merge. But merge function में problem क्या था? Common columns होने चाहिए. At that time it can merge. Otherwise we have to specify some like arguments we have to use. So that's that. That is something about the np.c underscore. But just ignore that right now. Okay. So finally, right now we have a data set. Okay. अब हमारे पास data set है. But now I do not want to print the whole data set. मुझे सिर्फ first 5 rows display करना. Just write down df.head in the bracket. df.head. It just return first 5 rows. Okay, so right now आपको थोड़ा structure पता चल जाएगा कि how the data structure is there. Sorry, like what is the nature of the data. So actually I have 4 features and 1 target column. And let's just check all the columns and target column also having a numerical data. Okay, कोई भी actually इसमें classes like categorized data. But let I just write down one more thing. मुझे यहाँ पे actually अब लिखना है actually df.describe. So what is that describe? It is just used to describe the thing. तो सिर्फ describe करेगा अपने हर एक data को. Okay, sorry, I didn't print that actually. 1 minute. Huh? Yeah. So print df.describe. So हम लोग को actually और सही से nature पता चलेगा. So totally how many like attributes we have? Total we have 4 attributes. And finally there is a class column. Name of the class column is target column. So total how many records are there? Total 150 records are there in each and every attribute. Okay, total 150. Okay, and guys, neither of them are missing actually.
So neither of them are missing in the sense what I mean to say, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रिंट करता like df dot a particular कोई एक कॉलम में ले सकता हूँ. Okay, directly you can just write down df dot shape. So df in the sense that's your data frame. So in the data frame we have 150 records and 5 columns we have. 150 records and 5 columns we have. So now let me just check the sepal length. So describe function apply करने के बाद अगर sepal length check करें, so sepal length में उन्होंने बोला sir you have 150 records in sepal length also. In short, neither of the element is missing. In the sepal width 150, in petal length 150, in petal width also 150, and also in target that is 150. In short, data में कुछ भी missing values नहीं. Okay, हमारे पास जो data है वो एक ID का क्या बोलते हैं हम लोग उसको, identical data है, हमारे पास कुछ भी missing value नहीं है. That's the thing. Now it just apply describe function just apply some some statistical operation. It just apply, just find mean, standard deviation, minimum 25% quartile, मतलब first quartile, second quartile, third quartile, and maximum value just return. So that's that. Now ये आप sepal length, sepal width, petal width मतलब width और length में देख सकते हो कि कोई भी record missing नहीं है. And target के अंदर सबसे minimum value क्या है? The minimum value is actually 0. Min value is 0, max value is 2, max value is 2. In short 0 से 2 तक का data उसके अंदर है. Okay, and one more thing, like अगर हम first quartile check करें, so min to 25, just observe this. So first 25% में सब के सब record 0, because it is just used to find out the minimum value. अगर किसी एक record में 0.5 भी होता तो यहाँ पे 0 की जगह कुछ और आंसर आता. Okay, now 25 to 50% data check करें. 25 to 50% data check करें, having a 1 as a min value. 50% to 70 and 75 to 50 to 75, 75 to max. So max is a 2, but in between 55 to 75 there is actually like third quartile के अंदर भी हमारे पास 2 है. In short time, what I meant to see, or what I meant to say, actually target के अंदर सिर्फ 3 values है. Target के अंदर सिर्फ 3 values. Which 3 values are there? 0.0, 1.0 and 2.0. 0.0, 1.0 and 2.0. Okay, and ये चीज एक्चुअली मुझे यहाँ से पता भी चल जाता अगर हम इसकी जगह ऐसा कुछ लिखते. Let us just print iris. Then what about this target names? But obviously it is also a dictionary. It is also a key name of that particular dictionary. Okay, the target names में आप देखिए हमारे पास टोटल 3 टारगेट है. सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका. सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका. So उन्होंने हर एक को एक नंबर दिया हुआ है. सेटोसा that's 0.0, versicolor 1.0 and actually virginica that is 2.0. So in short, target column is categorized in nature. Okay, target column और class column में हमारे पास categorized data है. That means we can apply the decision tree. Okay, that means we can apply the decision tree. Otherwise अगर वहाँ पे numerical column होता then we have to apply some regression algorithms. Okay, so that's that. So यहाँ तक I think कोई problem नहीं है. So what we did, हमने सिर्फ और सिर्फ पहले data set load किया हुआ है. Nothing else. हमने सिर्फ डेटा सेट लोड किया हुआ है. Now I want to check one more thing कि सर मेरा डेटा एक्चुअली शॉर्टेड है कि नहीं. मतलब शॉर्टेड इन द सेंस आई मीन टू से पहले मेरे पास डेटा का नेचर मुझे फाइंड आउट करना था कि पहले 5 में एक्चुअली आप देखो तो 000 आ रहा है. ओके, फर्स्ट अगर मैं हेड प्रिंट करूं तो सबके अंदर टारगेट 000 आ रहा है. एंड लास्ट 5 रिकॉर्ड्स अगर मैं डिस्प्ले करूं तो सब में टारगेट 2.0 आ रहा है. दैट मींस अकॉर्डिंग टू द क्लास वैल्यू इट इज शॉर्टेड. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्लास वैल्यू इट इज शॉर्टेड. So that's that. So that is something about actually data set. So इतनी सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए. Let I comment all this. मुझे सिर्फ डेटा लोड करना था. मुझे सिर्फ डेटा लोड करना था. So what we did, अब this हम लोग को जो required modules थे वो हमने लोड किए. ठीक है, डेटा सेट डॉट लोड आइरिस इन द सेंस आइरिस डेटा सेट हमने लोड किया. आफ्टर दैट हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया बिकॉज आइरिस इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम प्रीडिफाइंड क्लास ऑफ sklearn. So like हम लोग उसके साथ वर्क करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे. So what we did, we just convert this iris in a data frame. So we just write down pd.dataframe and this data is actually optional because that is the first positional argument. So आप data keyword लिखे ना लिखे it's okay. And we just use iris and square bracket में हमने data लिखा because iris having a dictionary type of data inside. तो उसमें से मुझे एक फर्स्ट ND array चाहिए था. So what I did, iris square bracket of data, it returns first 4 columns. In short, जिसके अंदर data था, it's an ND array type of thing. And after that मैंने उसके columns के नाम provide किए थे by using iris and feature names. Finally, we realized that we just used target column value. So हम लोगों ने क्या किया, np.c underscore नाम का एक class, sorry, एक function use किया. It's actually in class. Okay, उसका use किया and what we did actually हमने iris data, iris target.
इन दोनों का यूज कर, इन दोनों का एक्चुअली मर्ज किया और कॉन्केट किया. यू कैन सिंपली से दैट ऑन x is 1 and we just pass that combined value to the data, ensure to the actually data frame, and it returns a df. And columns में हम लोगों ने एक extra value लिख दी, that is nothing but a target. So that's that. So that is our data frame, guys. Now what is my next requirement? My next requirement is like generally हम लोग अगर x and y, अगर मैं decision tree की बात करूं, so as I told you कि अगर आप लोग x input करोगे तो आपको y मिलेगा. In short, मुझे actually y equal to f of x के फॉर्मेट में डेटा चाहिए. So f of x, these are nothing but our input. Okay, these are nothing but all the columns which we will input. And y, that is nothing but an outcome. Okay, so मुझे इस तरीके से, और what about the f? F is nothing but a relation. इनके बीच में मुझे एक function develop करना है. So what I will do, मैं यहाँ पे x and y दो चीजें develop कर लेता हूँ. So what about x? X in the sense what? It's a first four columns actually. What about x? It is nothing but an all the columns. It's nothing but an x. Okay, x in the sense what, guys? Still I'm telling, like I'm asking, what about x? X का मतलब क्या होगा? All the columns actually. And what about y? What about y? जिसके अंदर हमारे पास टारगेट कॉलम मिलेगा. तो आप डेटा फ्रेम के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, एंड गाइस आप आइरिस के ऊपर भी वर्क कर सकते हो. तो मैं एक काम करता हूँ, आइरिस में से मैं डेटा लेता हूँ. अब देखो मैंने अभी आइरिस डॉट डेटा क्यों लिखा? बिकॉज इट्स ए डिक्शनरी टाइप ऑफ थिंग. तो डिक्शनरी में आप डॉट भी लिख सकते हो और डिक्शनरी में आप इस तरीके से भी डेटा ले सकते हो, आइरिस ऑफ डेटा. ओके, तो डेटा के अंदर सबके सब, डेटा के अंदर क्या है गाइस मेरे पास? इन दिस डेटा वी हैव ऑल द डेटा एक्चुअली, और 4 एट्रीब्यूट्स वी हैव. तो ये सब का सब डेटा मुझे लोड करना है. ओके, सो इसमें से 0 to 150 रोज एंड ऑल द कॉलम्स आई वांट टू लोड. व्हाट अबाउट y? y के अंदर मुझे एक्चुअली टारगेट वैल्यू चाहिए. सो टारगेट में 0 to 150. सो व्हाट इट रिटर्न्स एक्चुअली, जैसे iris डॉट डेटा, इट्स एन एनडी एरे. तो मुझे चेक करना है ये क्या रिटर्न कर रहा है. सो लेट आई जस्ट print a type of that and type of y here. So it's an ND array, guys. It's nothing but an ND array, nothing else. Okay, it's nothing but an ND array. Just check. Okay, so now we have ND array. और आप यहाँ पे उसका shape भी check कर सकते हो. Okay, आपको पता है ND array में actually मेरे पास shape नाम का भी property था. So that's that. Row must be same. Number of rows must be same. So 140, 150,4 and 150,1. And should only 150 columns are there. 150 rows are there. That's it. So that is nothing but a. Okay. So what is this? That is nothing but हम लोगों ने क्या किया? X and Y. X in the sense these are my features, and Y in the sense that's nothing but an output column. Now, guys, another thing is now let me do one thing. हम लोग एक like data को पहले print करके देखते हैं. ओके, डेटा को पहले मतलब थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं. लेट मी चेक कि कोई दो कॉलम के बीच में रिलेशन है कि. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, बिफोर दैट आल्सो वी कैन जस्ट प्रिंट दैट. तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, लेट आई जस्ट यूज सीबोन. एंड फॉर दैट सबसे पहले मैं सीबोन का स्टाइल फंक्शन यूज करके बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि डार्क ग्रिड होता है, सो मैं व्हाइट ग्रिड ले लेता हूँ. सो इन शॉर्ट व्हाटएवर व्हाइट ग्रिड या डार्क ग्रिड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. बाय डिफॉल्ट मैंने व्हाइट ग्रिड दिया, इन द सेंस बैकग्राउंड में जो बाय डिफॉल्ट ग्रिड्स आते थे उसके कलर्स मैंने रिमूव कर दिए. Okay, now another thing is, now let me use pair plot actually. Pair plot function I think आप लोग को पता है. So what is the use of the pair plot? आपके पास जितने रो जितने कॉलम्स अवेलेबल है, जितने रो जितने कॉलम्स अगर आपके पास अवेलेबल है, उसमें वो लाइक हर एक के बीच में रिलेशन जनरेट करेगा. So let I pass df as an argument. Okay, let me pass df as an argument and let me pass one more argument that is hue. So actually मुझे क्या करना था, df के अंदर जितने भी रिलेशन है उसमें मुझे ह्यू के हिसाब से, ह्यू इज नथिंग बट इन थर्ड आर्गुमेंट एक्चुअली, वो एक्स एंड वाई मतलब दो वैल्यू को कंपेयर करता जाएगा. बट मुझे एक्चुअली इसमें एक एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड करनी है. लेट मी जस्ट डिस्प्ले द डेटा विदाउट ह्यू एंड आफ्टर दैट ह्यू के साथ भी हम डेटा डिस्प्ले करते हैं. सो plt.show बिकॉज़ वी आर वर्किंग इन ए नोटपैड एक्चुअली. सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे क्या कामकाज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट कॉल ए set underscore style function and use the white grid as a theme. Okay, so मुझे बैकग्राउंड में एक्चुअली ग्रिड नहीं चाहिए, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए था कुछ भी. So I just use white grid. And after that, I just use pair plus function because I know df having 4 columns. That's are the attributes, and 5th column is nothing but a target column. तो मुझे इन सबके बीच में relation चाहिए था. That's it. SNS is not defined. Okay, so seaborn को हमने SNS नहीं लिया. ठीक है, sorry. So I just modify this, import seaborn as SNS. Now just check. हम लोगों ने उसके बाद pair plot function use किया और उसमें df argument पे pass किया. So guys, here we have actually 5 columns, 5 by 5. So that's a 5 by 5 matrix. So whatever the first value, that's actually sepal length. Second one is second row is for sepal width. Third one is petal length, petal width, and the last one is target.
एंड इन सिमिलरली कॉलम में भी आपको सबसे पहला क्या मिलेगा, इट्स एक्चुअली सेपल लेंथ, सेकंड वन इज एक्चुअली सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड द फाइनल वन विल बी द टारगेट। तो ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कुछ ब्लू 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 आ रहा है। आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि सर एक्चुअली या आई जस्ट नो दैट थिंग कि सेपल लेंथ सेपल विड्थ में कुछ रिलेशन है, सेपल लेंथ सेपल विड्थ में कुछ रिलेशन है, बट उसके साथ साथ मुझे टारगेट की वैल्यू भी चाहिए। मुझे ये नहीं पता चल रहा था टारगेट इन द सेंस आई हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज इन अ टारगेट, and in target I have actually 3 different values, and which 3 different values guys we have? So where is that? हमने टारगेट को प्रिंट किया था, यही है सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका। तो मुझे इन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट कलर में प्लॉटिंग चाहिए। राइट नाउ ब्लू कलर टेप जैसा मेरे पास डॉट्स आ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर का प्लॉटिंग चाहिए। सो लेट वी ऐड वन मोर कैटेगरी। अभी तक क्या हो रहा है, जैसे हमने ग्राफ जो डेवलप किया, जो हमने ग्राफ लिखा, ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया, उसके अंदर किस तरीके से रिलेशन आ रहे हैं। सो फर्स्ट इंटरसेक्शन अगर हम चेक करें, सो दैट इज सेपल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ। फर्स्ट इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो सेपल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर आप चेक करें, सो दैट इज नथिंग बट एक्चुअली सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ। बट मुझे इसमें नहीं पता चल रहा है कि इसमें से कितने सेटोसा है, कितने वर्सिकलर है, कितने वर्जिनिका। इन शॉर्ट मुझे पर्टिकुलर चीज पता नहीं चल रही कि जैसे यहाँ पे थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चेक करें तो यहाँ पे मुझे स्कैटर प्लॉट मिल रहा है, एंड स्कैटर प्लॉट में एक पोर्शन ऐसा है जो पूरा इंडिविजुअल है। तो मुझे रिलेशन ही नहीं पता चल रहा है कि किसमें क्या चेंजेस करूं तो कैसा रिलेशन है। सो व्हाट आई एम पासिंग, मैं थर्ड कैटेगरी पास कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट अ टारगेट। Okay, that is nothing but a target value. So what I just write down, u is equals to target. U is equals to df. Okay, u is nothing but a target. What's the target? Target guys आपने यहाँ जो लिखा है, that's a column name. So df में से मुझे actually u as a target use करना था. Now let's run this. Target in the sense what? Like it's actually class column value. And u in the sense what? I just inform my like df just मुझे इसके हिसाब से work करना है. So just now just check this. So आप जैसे फर्स्ट देख सकते हो सेपल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ, वी हैव 3 हिस्टोग्राम्स एक्चुअली। ओके, सो सेपल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ, सबसे पहला जो ब्लू हिस्टोग्राम दिख रहा है दैट इज एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बिकॉज़ खुद के साथ खुद का अगर आप लाइक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो देन इट्स नथिंग बट एन नॉर्मल हिस्टोग्राम। ओके, एंड गाइस अभी आपसे आप लोग को पता चल रहा है कि ग्रीन एंड सैफरन कलर एंड ब्लू कलर, सो दिस आर 3 डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पे हम लोग हर एक का आइडेंटिफिकेशन देखें तो यहाँ पे देखिए ना मेरे पास एक बॉक्स ड्रॉ हुआ है एंड उसके अंदर लिखा है ब्लू इन द सेंस 0.0, सैफरन इन द सेंस 1.0 एंड ग्रीन, इट्स अ ग्रीन, द थर्ड कलर इज ग्रीन, इट्स 2.0. So simply row number 1 column number 2, row number 1 column number 2, we can simply say that sepal length versus that is actually sepal width, sepal length versus sepal width. तो जैसे जैसे sepal width increase हो रहा है sepal length increase in a particular category. तो पर्टिकुलर डेटा में आपको पता चल सकता है हाँ इसमें ये चेंजेस करूं तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चेक करें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चेक करें तो यहाँ से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि हाँ भाई अपना पेटल लेंथ और सेपल लेंथ में ज्यादा कोई रिलेशन नहीं, पेटल लेंथ और सेपल लेंथ में ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। बट इन द केस ऑफ फर्स्ट कॉलम यहाँ 0 लिखा है, 0 एंड डॉट डॉट, व्हाट अबाउट दिस 0 इन द सेंस दैट्स नथिंग बट अ सेटोसा। Okay, that's nothing but a setosa. तो सेटोसा में ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, सेपल लेंथ एंड पेटल लेंथ, बट देयर इज a like quite good relation in between, actually quite good correlation in between sepal length and petal length. So इससे हम लोग को easily identification मिल जाएगा कि हाँ भाई किसका क्या relationship है. Okay, so easily we can just like work with that particular thing. So now that's that. So that is how to just draw a relationship between the data. So hue लिखने का मतलब क्या हुआ? I want to add one more category. आप लोग को ये पता है. Now I just comment that thing because हर एक टाइम मुझे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है. Now finally अब हमारे पास फीचर्स x के अंदर है एंड y के अंदर एक्चुअली मेरे पास टारगेट है. ओके, x के अंदर मेरे पास फीचर्स है. व्हाट वी डिड, अब df का भी यूज कर सकते हो गाइस, इट्स नॉट अ बिग डील. df का भी आप यूज कर सकते हो. ओके, बट मैंने डायरेक्टली डेटा का यूज कर लिया बिकॉज आइरिस के अंदर डेटा नाम का एक मेरे एनडी डेटा आइरिस इट्स आइरिस के अंदर डेटा नाम का एक एनडी एरे था, तो उसमें सबके सब रो और ऑल द कॉलम्स आई जस्ट फेच. मैंने 0 to 150 इसलिए लिखा कि एक्चुअली अगर ज्यादा है तो भी मुझे नहीं चाहिए. आई वांट जस्ट फेच ओनली फर्स्ट 150 रोज. नाउ गाइस फाइनली व्हाट वी विल डू, सो मेरे पास अब डेटा x एंड y दो डिफरेंट वेरिएबल्स में, x हैविंग इन एट्रिब्यूट्स, y हैविंग इन टारगेट कॉलम और टारगेट वैल्यू. सो व्हाट आई वांट टू डू, मैं अपना एक मॉडल डेवलप करना चाहता हूं एंड मॉडल डेवलप करने के बाद मुझे चेक करना है कि भाई ये मॉडल सही है कि नहीं. आई वांट टू जस्ट चेक, आई वांट टू जस्ट प्रेडिक्ट वो पर्टिकुलर चीज सही है कि नहीं. So for that let me do one thing, मैं ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा अभी राइट नाउ दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना चाहता. व्हाट आई एम डूइंग,
मैं पूरा 150 रो को एक्चुअली एज ए ट्रेनिंग ही यूज करूंगा। ओके उस 150 को मैं एज ए ट्रेनिंग डेटा यूज करूंगा। बट वन थिंग आई विल डू, मैं सिर्फ क्रॉस वेरीफाई के लिए एक एलिमेंट रेंडमली फेच कर रहा हूँ, एक एलिमेंट रेंडमली फेच कर रहा हूँ और 149 एलिमेंट्स के थ्रू 149 रिकॉर्ड्स के लाइक उन 149 रिकॉर्ड्स का यूज करके मैं मॉडल डेवलप करूंगा। एंड जब मॉडल डेवलप होगा तो एक जो सिंगल रो हमने फेच की थी वो रैंडम वैल्यू, उसको मैं फायर करूंगा एंड आई विल जस्ट गेट द टारगेट वैल्यू। मुझे सिर्फ इतना सा करना है। ओके तो चारों कॉलम में से एक एक रैंडम वैल्यू लेती। आई हैव 4 कॉलम्स इन एक्स। द फर्स्ट वन इज एक्चुअली लाइक पेटल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। ओके सो एक एक चीज हम लोग लेते हैं। अदरवाइज वी कैन डू वन मोर थिंग, ऐसा ना करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग क्लास के हिसाब से भी रैंडम वैल्यू फेच कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हमारे पास 3 क्लास वैल्यूज थी, सेटोसा, then another one is actually virginica and the third one is versicolor। so हम उसके लिए भी वर्क कर सकते हैं। तो क्लास कॉलम के हिसाब से चलते हैं। so setosa underscore index, कुछ भी एक वेरिएबल का नाम लिया मैंने और एक रैंडम वैल्यू जनरेट करा देते हैं। सो रैंडम वैल्यू के लिए गाइस मैं एक और मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली रैंडम and let us just write down rnd। okay and let us just write down over here rnd dot अब random value, let us just say like as we know first 50 total we have 150 elements, उसमें से first 50 actually setosa के लिए, next 50 elements are for actually like virginica and last 50 elements are for actually like versicolor। okay हर एक को actually यहाँ पे like equally distribute किया हुआ है। okay so what I will do, rnd dot मुझे random number चाहिए, so range function I will use but random range। okay random range I will use and मैं यहाँ से argument दे देता हूँ 0 to 49। why 0 to 49? because index will always start with a 0। तो मुझे index value एक random number भी in between that generate करना। okay तो first category के लिए एक random number generate किया in the second value। उसी तरीके से दूसरा हम क्या करेंगे, let us just now give the name virginica। तो उसके लिए मुझे रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है तो कहां से करूंगा, 50 to 99। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन, दैट इज नथिंग बट ए versicolor। तो उसके लिए भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करा देते हैं, दैट इज एक्चुअली 102। आफ्टर दैट 149। ओके तो 3 हम लोग रैंडम वैल्यू जनरेट करेंगे। विल जस्ट जनरेट 3 रैंडम वैल्यूज एंड इस रैंडम वैल्यू को गाइस सबसे पहले रैंडम वैल्यू जनरेट करने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि लाइक इस रैंडम वैल्यू में कोई रिकॉर्ड्स रख देंगे। मतलब अपने जो डेटा सेट था, अपना जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर से कोई एक लाइक उसके अंदर एक रिकॉर्ड वहां पर पुट कर देंगे। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक्चुअली एक्स का भी यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज आइरिस डेटा आल्सो क्योंकि दोनों के अंदर सेम वैल्यूज है। अदरवाइज आई कैन जस्ट यूज डीएफ आल्सो, उसके अंदर भी सेम वैल्यू है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट सेटोसा। टेस्ट सेटोसा is equals to choice is yours, you can just use x, you can use iris data, you can use ds, तीनों वेरिएबल के अंदर सेम डेटा है। so let I just use iris.data and इसके अंदर ये रैंडम वैल्यू में पास कर रहा हूँ guys। so iris.data and now let I just pass the random value that is actually setosa index, okay so what it returns a particular row। okay and उसके अंदर मुझे पूरे कॉलम्स चाहिए, जैसे स्पेसिफाइड कॉलम। ओके मैंने यहाँ पे पूरे कॉलम स्पेसिफाई कर दिए। सो व्हाट इज दैट, इसके अंदर क्या आएगा, सेटोसा के अंदर हम लोगों ने जो एक्चुअली रैंडम वैल्यूज जनरेट की थी सेटोसा के लिए, मतलब फर्स्ट 50 एलिमेंट्स में से हम लोग को कोई एक रिकॉर्ड चूज करना है, सेकंड 50 रिकॉर्ड्स के अंदर से हम लोग को कोई रिकॉर्ड चूज करना है, थर्ड 50 रिकॉर्ड्स में से कोई रिकॉर्ड, मतलब थर्ड इन द सेंस रिमेनिंग 50 रिकॉर्ड्स में से मुझे कोई एक रिकॉर्ड चूज करना है। नाम चेंज कर देते हैं, दैट इज एक्चुअली वर्जिनिका। ओके एंड हियर लेट अस जस्ट चेंज द नेम देयर टू द versicolor। okay and let I just use the same variable name over here, यहाँ पे versicolor and here let I just write down virginica। so that's that। so हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने x के अंदर फीचर्स रख दिए, y के अंदर एट्रीब्यूट्स रख, y के अंदर टारगेट कॉलम सेट कर दिया। आफ्टर दैट रैंडम कलर कुछ लाइक रैंडम नंबर कुछ चूज किया। नाउ गाइस अब मुझे ऐसा करना था कि सर अगर ये रैंडम जो भी आप रिकॉर्ड या रैंडम फीचर्स आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो सिलेक्ट कर रहे हो, अगर वो ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा सेट में है तो मुझे आंसर ऑलवेज 100% एक्यूरेट ही मिलेगा। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं x के अंदर से उसको डिलीट कर देता हूँ, x के अंदर से उसको हम डिलीट कर देते हैं। सो x इक्वल्स टू np.delete x इक्वल्स टू np.delete एंड x comma which value you want to delete guys। तो मुझे यहाँ पे डिलीट करना है setosa underscore index I want to delete and row wise I want to delete। so 0 and 1, अब दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो। तो row and column it's an ND array,
तो मुझे रो वाइज चाहिए. बाय डिफॉल्ट x is equals to 0, दिस इज नथिंग बट एन x is value, बट लेट मी स्टिल स्पेसिफाई दैट. तो x के अंदर से मैंने रिमूव किया. वरना व्हाट विल हैपन, अब आपके पास कितने एक्चुअली आपके पास कितने रिकॉर्ड्स हो गए गाइस एट्रीब्यूट्स में? वी हैव 149 रिकॉर्ड्स. एक रिकॉर्ड मैंने रिमूव किया. बट व्हाट अबाउट द y वैल्यू? सो y के अंदर गाइस आपके पास 150 है. सो अगर एक भी वैल्यू ज्यादा है देन इट मेक्स एन इश्यू. सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं y के अंदर से भी इसी वैल्यू को डिलीट करूंगा. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, y के अंदर से भी मैंने सेम वैल्यूज डिलीट की. सो व्हाट इट राइट नाउ आफ्टर दिस डिलीशन ऑपरेशन मेरे पास एक्चुअली कितने वैल्यूज बचेंगे? 149. तो ये चीज मुझे सब में करना है. ओके, सो वर्जिनिका के अंदर से भी हम लोग ये डिलीट करेंगे. So that's that, and the same thing we will do over here. So that is actually versicolor. So that is, this is also the option आप ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. एंड गाइस आप लाइक ट्रेनिंग टेस्टिंग के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो. तो हम दोनों काम करेंगे. ओके, हम लोग दोनों चीज करेंगे. So now let I just print all this data. Once let I just print all this data. So मैं टेस्ट सेटोसा को प्रिंट कर देता हूँ कि भाई एक्चुअली टेस्ट सेटोसा की वैल्यू क्या आ रही है. ओके, टेस्ट सेटोसा की वैल्यू क्या आ रही है. आई वांट टू जस्ट प्रिंट दैट. सो उसमें चारों के चारों एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है. ओके, एंड उस पर्टिकुलर टेस्ट सेटोसा के लिए मुझे एक्चुअली टारगेट नेम भी प्रिंट करना है. ओके, सो टारगेट नेम्स and let I just write down iris dot target. What is that iris? Iris is an actually data set जिसके अंदर टारगेट नाम का एक कॉलम था, जिसके अंदर एक टारगेट नाम का कॉलम था. और उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ? मैं सेटोसा इंडेक्स पास करूंगा. सो उस कॉलम के अंदर सेटोसा इंडेक्स इन द सेंस वो जो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया था वो आप पास करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? इट जस्ट रिटर्न आइदर 0 और 1 और 2. इट जस्ट रिटर्न आइदर 0, 1 और 2 बिकॉज़ टारगेट के अंदर तीन ही वैल्यू थी, आइदर 0 और 1 और 2. और उसको मैं एक्चुअली टारगेट नेम को पास कर रहा हूं तो मुझे एक्चुअली पर्टिकुलर टारगेट का नाम मिलेगा. मैं बेट से सेटोसा, मैं बेट से वर्जिनिका, मैं बेट से थर्ड वन इज versicolor. तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिल जाएगी. एंड लेट मी क्रॉस वेरीफाई x डॉट शेप एंड y डॉट शेप. बट ऑब्वियस यहाँ पे एक एक वैल्यू कम आने वाली है. ओके, सो इसको मैं प्रिंट करूंगा यहाँ तीनों जगह पे. तो यहाँ मुझे एक्चुअली मैं क्रॉस वेरीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू जो मैंने सिलेक्ट किया 50 टू 99 के इन बिटवीन. सो यहाँ मैंने सेटोसा की जगह मुझे यहाँ पे वर्जिनिका ही मिलना चाहिए. ओके, मुझे यहाँ पे वर्जिनिका ही मिलना चाहिए. सो लेट आई जस्ट पास वर्जिनिका इंडेक्स. ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई आपने कुछ और सिलेक्ट करके किसी और में हम लोग वैल्यू फायर कर रहे हैं. ओके, एंड लेट मी प्रिंट versicolor. सर स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं किया है एंड में. कर देता हूँ मैं सर. 1 मिनट सर. वेयर इज द versicolor? ओके, कहाँ पे सर? ओके, फाइन. x डॉट शेप से पहले ना. ओके, सो इज दिस क्लियर गाइस? सो लेट मी रन दिस. तो मैंने कुछ रैंडम वैल्यू चूज की. So what's the problem? Okay, target underscore names are not defined. So okay. ये target underscore names direct तो use नहीं कर सकते ना. It is also inside the iris. हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रिंट किया था, आपको पता हो तो target underscore names. That is also an iris data. Okay, that is also available in iris data. So just check. So ये हमने random number कोई भी चूज किया. अगर आप यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाहते तो आप सेटोसा इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हो. ओके, इसको भी प्रिंट कर ही देते हैं. सेटोसा इंडेक्स. The next one is actually वर्जिनिका index, and the final value is nothing but a versicolor index. Okay, so random value कुछ भी choose होगी. Okay, so here we have 30 in between 0 to 49, 50 to 100 के बीच में से 83 and 100 to 149 in between actually 120. तो उसका टोटल रिकॉर्ड्स. और हम लोग को यहाँ पता चला हो कि the first thing is सेटोसा, second represents actually versicolor, third represents actually वर्जिनिका, and finally तीनों में से एक रिमूव किया. पहले एक रिमूव करोगे तो 149, एक सेकेंड वैल्यू हम लोगों ने रिमूव करी तो 148, and finally shape is 147. तो 147 रिकॉर्ड से मैं अब ट्रेन करने वाला हूँ अपने मशीन को. सॉरी, हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे. एंड फाइनली जो हमारे पास फाइनल जो तीन हमने रैंडम वैल्यू चूज की है उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि भाई ये वैल्यूज वहां पे सेम मिल रही थी. ओके, सो फाइनली लेट मी जस्ट डू वन मोर थिंग. लेट आई जस्ट क्रिएट अ मॉडल. तो उसका नाम मैं रख देता हूँ मॉडल, लाइक मॉडल अंडरस्कोर ट्री. एंड गाइस नाउ व्हाट वी हैव टू डू. सो जैसे हम sklearn के अंदर से हम लोगों ने डेटा सेट्स लिया था, इसी तरीके से एक सब मॉड्यूल है दैट इज ट्री. That is actually tree. So let I just write out from sklearn import tree, and the tree having actually decision tree classifier.
Okay, the tree having actually decision tree classifier class. So decision tree classifier, नो डाउट हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू जस्ट पास के मुझे जीनी इंडेक्स के हिसाब से वर्क करना है, मुझे एंट्रोपी के हिसाब से वर्क करना है, मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट लेट आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसका एक बार हेल्प ओपन कर देता हूं तो हम लोग को एटलीस्ट सिंटेक्स पता चले कि इसका सिंटेक्स क्या रहेगा. ओके, राइट नाउ मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का ही यूज करके वर्क करूंगा. ओके, मैं कुछ ज्यादा वर्क नहीं करने वाला, सब के सब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही यूज करने वाला हूं, बट दिस इज द सिंटेक्स. This is the syntax. Okay, so by default it uses the Gini index. By default it uses the Gini index. Splitter में best format use कर रहा है. Maximum depth कुछ भी नहीं लिखा है. Okay, minimum sample split that is 2. Minimum simple leaf that will be 1. In short, max depth equals to none in the sense pre-pruning भी use नहीं हो रहा है. Pre-pruning भी use नहीं हो रहा है. That means pre-pruning in the sense पहले से मैं उसको बोल दूं up to this I want to divide. Okay, तुझे best fit मिले या ना मिले up to this I want to divide. तो ऐसे कोई भी चीज हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं. ओके गाइस, अगर आप इसको रीड करना चाहते हो देन यू कैन जस्ट यूज, आप उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, जैसे कि क्राइटेरियन में मेरे पास दो पॉसिबल वैल्यू, फर्स्ट वन इज जीनी, सेकंड वन इज एंट्रोपी. सो जीनी इंडेक्स एंड अनदर वन इज एंट्रोपी. तो अगर आप एंट्रोपी यूज करोगे देन इंटरनली इट यूजेस ID3 or C4.5 also you can apply, but what is the difference between ID3 and C4.5 right now, you know that thing. Okay, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, but by passing some like by just modifying the remaining attributes, आप एंट्रोपी ही यूज होने वाला है, बट उसको मॉडिफाई करके हम लोग C4.5 में कन्वर्ट कर सकते हैं ID3 को. सो दैट्स दैट. राइट नाउ उसको डिस्कस नहीं कर रहे. ओके, राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन. मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉडल ट्री डेवलप करना था. सो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया. इसका ऑब्जेक्ट बनाया गाइस हम लोगों ने, वी जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसीजन ट्री क्लासिफायर. इंटरनली वो क्या यूज कर रहा है, जस्ट इग्नोर दैट राइट नाउ. Okay, now this model tree, using this model tree I want to just now I want to just train my model by using this fit function. Okay, आप x and y argument में pass कर दीजिए, that's it. Your much like model will be like trained. After this function your model will be automatically trained. So that's that, my model is trained actually. So now what is our next requirement? Sir, model अगर train हो गया then what is our next requirement guys? So now मुझे actually like मेरे पास तीन अलग अलग वैल्यू थी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए. द फर्स्ट वन इज टेस्ट सेटोसा, टेस्ट वर्जिनिका एंड टेस्ट वर्सिकल. सो तीनों में से मैं रैंडम कोई भी वैल्यू पास करूं तो मुझे इसका प्रेडिक्शन चाहिए. मुझे तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पास करूं तो मुझे इसका प्रेडिक्शन चाहिए. सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग. लेट आई जस्ट राइट डाउन मॉडल अंडरस्कोर ट्री that will having a tree actually. So model underscore tree dot predict and inside that let I just pass the first value that is nothing but test underscore setosa. Okay, test underscore setosa. Now इसको मैं स्टोर कर देता हूँ prediction setosa. Okay, और इसकी वैल्यू चेक करते हैं. print prediction setosa. Let me check क्या आंसर क्या है. What is the problem? Okay, now guys, we have a problem. What is the problem? Reshape your data either by using array dot reshape minus 1 1 or by using 1 minus 1. So what is the problem actually? The problem is अब आप जब argument में testing value pass करोगे, so it must be an ND array. Argument में जब आप यहाँ पे value pass करोगे, then it must be ND array, otherwise it must be a list type of data. But हम लोगों ने जब data pass किया, यहाँ जो data pass किया, it's a single integer value. Just read this. हम लोग यहाँ से जो पास कर रहे हैं टेस्ट अंडरस्कोर सेटोसा वैल्यू, so that is either 8 or 93 or 125. हर एक टेस्टिंग वैल्यू हम लोगों ने जब फेच किया था, so उसमें हम सिंगल इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से वैल्यू फेच कर रहे हैं. So what we have to do for that, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एनी हाउ इसको एक्चुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा either ND array और लिस्ट के अंदर. So let I just use this square brackets. मैं उसको यहीं से लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ. ओके, हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. भाई जो तेरा आंसर आएगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेके देना. Okay, so that is the list is a one type of ND array. So now ये error generate नहीं करना चाहिए. So be careful for that particular thing. आपको syntax पता होनी चाहिए. Okay, now what is the answer? Answer is 0. What about 0? 0 in the sense what? It is setosa. 0 in the sense what? It is nothing but a setosa. So हम लोग को पता ही था कि first 49 मतलब इनमें से कोई भी एक वैल्यू पास करूं, first 0 to 49 में से कोई भी वैल्यू पास करूं तो उसके क्लासिफायर का नाम setosa है. तो मुझे setosa मिला. Now let I just do the same thing. मैं एक्चुअली ये 3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. नाउ प्रेडिक्शन सेटोसा की जगह हम लिख देते हैं सेकंड वन इज वर्जिनिका. नाउ लेट आई जस्ट पास टेस्ट अंडरस्कोर वर्जिनिका एंड द सेम टेस्ट अंडरस्कोर versicolor. ओके, वन मिनट.
So now let me check. सेकंड में आंसर आना चाहिए 1, थर्ड में आंसर आना चाहिए 2. So that's it, we just got it. Okay, 0 1 2 की जगह अगर आप प्रॉपर डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप वंस अगेन ये जो वैल्यू आई आंसर में उसको यहाँ पे पास कर सकते हो. You can just use the same syntax over here. Okay, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं. So let us just do that. So हमने टेस्टिंग डेटा लिया, रेंडमली कोई एक नंबर चूज किया. ओके, रेंडमली कोई एक नंबर चूज किया और उसमें ये हमारा इंडेक्स मतलब वो नंबर्स को हमने साइड में रखा और उस इंडेक्स वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं भाई ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं. तो कहीं पे कुछ गड़बड़ी की हमने ब्रैकेट में डबल स्क्वायर ब्रैकेट. सो जस्ट चेक, हमने पहला इंडेक्स वैल्यू पास किया था. ओके, तीनों में सेटोसा सेटोसा सेटोसा. रीजन इज व्हाट, यहाँ पे हमने वर्जिनी का पास किया, दैट्स दैट. यहाँ पे हमने पास किया वर्सी कलर. तो सेटोसा क्यों आर्गुमेंट में आएगा, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा. हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ. सो हियर वी हैव iris dot target names, then iris dot target and prediction setosa and prediction. okay sorry, यहाँ पे मैं वैल्यू यूज नहीं कर सकता बिकॉज इसका आंसर आ रहा है 0 1. ओके, मुझे टारगेट के अंदर नहीं डायरेक्ट वैल्यू पास करनी थी. सॉरी, मुझे डायरेक्ट वैल्यू पास करनी थी बिकॉज टारगेट के अंदर टोटल डेटा था ना मेरे पास. तो टारगेट का वैल्यू मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता, मुझे डायरेक्टली टारगेट नेम्स के अंदर ये इंडेक्स वैल्यू पास करनी है. आई होप दैट इज क्लियर गाइस, ये समझ में आया. So now the output is setosa, setosa, then another one is versicolor and the last one is virginica. So हमने तीनों टेस्टिंग वैल्यू वही पास की थी तो हम लोग को 100% आउटपुट मिल रहा है. So right now that's 100% accurate. Okay, simply you can say that that is actually 100% accurate. So I hope that is clear to everyone guys. Is this clear? So in the next session what we will do, right now we लोग को 100% accuracy मिल रही है. But next session let me do one thing कि हम लोग कोई भी दो रैंडम कॉलम्स लेते हैं जिसके बीच में कुछ रिलेशन है. तो बस हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तब हम लोग को पता चला था एक्चुअली सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ के सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ में काफी रिलेशन है. और यू कैन सिंपली से दैट एक्चुअली पेटल लेंथ और पेटल विड्थ में काफी रिलेशन है. So let me choose two attribute and try to find out same data set I will use. कोई भी दो एट्रीब्यूट लेंगे and we will just try to check कि इनके बीच में कुछ एक्यूरेसी में 0 मतलब कुछ परसेंटेज में चेंजेस आ रहा है कि नहीं. बट इन दैट टाइप we will not use the same approach. हम लोग वहां पे कोई random value choose करके काम नहीं करेंगे. We will just divide our data set into 70-30 parts. 70% we will use for the training and 30% we will use for the testing. Okay, उसमें divide करने के बाद हम कुछ work करते हैं. So guys,